नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ दी इंदिरा गांधी एरेना में, जहाँ हो रहा है द ग्रेट इंडियन किड्स फेस्टिवल, जो कि है इंडियाज़ बिगेस्ट किड्स फेस्टिवल। हमेशा की तरह जोश और उत्साह टक्कर का है। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से जो यहाँ पे मौजूद हैं। नमस्कार, आइए बात करते हैं हमारे स्टॉल मेंबर्स से। आपका नाम? Hi, I'm Arpita. व्हाट इज़ योर स्टॉल अबाउट? My brand is Momify, and we basically deal in Luke's oils. That's nourishing Luke's oil for both baby and for adults. They are all cold press oils for your regular massages, applicable for both skin and hair. And we basically deal in avocado oil. That's really good for your skin and hair, and it's high content of vitamin E as well. So we have a range of coconut lavender. We have coconut and avocado, a pure avocado oil, and an avocado rosemary oils. So that's what we deal in. So how are you liking the people's response out here? Definitely it's good. It's very intriguing. People are, my brand is getting awareness about it because it's a fairly new brand. So people are definitely looking at it and getting attracted to it. So it's a good platform for all the mothers and the babies to know about the brand. आपका यहाँ पे इंडियाज़ बिगेस्ट किड्स फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम है और यू हैव बीन बिफोर हियर? No, this is my very first time. I'm also attending for the first time and participating for the first time. But looking at the crowd and everything, I think it's really nice. The footfall is very good. So all the categories of people, all the age groups, everybody's there. आइए बात करते हैं कुछ उन बच्चों से जो कि एक स्टॉल को हैंडल कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को गेम्स भी खिला रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है दिलराज। आपका नाम? वरदान। तो आप दोनों यहाँ स्टॉल हैंडल कर रहे हो। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? Our stall is about a ring toss game, and like we're calling this Lord of the Rings because we thought it's like an innovative name for the stall and it's not too common or anything. So people have to like choose like what offer they want, and then like they have to throw one of these rings over there into a bottle, and so that's mostly about our stall. And then kids also get chocolates and added rings for free. So is this game paid? Yes. So जो भी लोग मनी यहाँ देते हैं, where does it go? Into a fundraiser. What is this fundraiser about? Animal well-being and sustainability. Okay, so on this social issue, how do you feel to do it in such a important issue? और आप लोग क्या message दे रहे हो out there to youngsters that to do something out there? So to youngsters, this is a message. If you want to have a good life, you should give back to society. That's a great wordings from the great people here. Thank you so much. आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। आपका नाम? नेहा गोयल। आपका नाम? प्रीति। आपका स्टॉल का नाम क्या है एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट? क्या मैसेज है स्टॉल का आपके? इट्स बेसिकली आवर स्टॉल नेम इज स्वाध्याय। सो इससे हम लोग आज की, बिकॉज टुडेज पेरेंटिंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट विद यूजिंग द NLP टूल्स, वी आर गिविंग द हाउ टू गो अबाउट विद द पेरेंटिंग, कि कैसे हम बच्चों को नेगेटिव वर्ड्स ना बोल के उसको पॉजिटिव reframing the words actually. So what was the thought behind this movement or call it an association? Number one, both of us are certified NLP practitioners. Now neuro-linguistic programming is actually a very scientific technique wherein we use the tools and the techniques which are they basically define our behaviors in the right way. So even if anybody is in a stuck state, by using NLP you can actually get out of it. There are so many scientifically proven tools and techniques which can help us in communicating with people, and we are focusing on children. So if parents, they know those tools, they know those techniques, they can actually bring up very, very confident kid. And that's actually, when a child grows up and, you find that they lack, certain traits which can help them to be successful in life. And they probably are, in some kind of situation of self-doubt. You wonder and you start correcting. So it's like a firefighting situation at that moment. But whereas the root problem actually is with the parenting that you have actually done. So that's where we are coming in between. We are trying to empower our parents so that they can bring up children who are very, very empowered and confident. So neuro-linguistic programming
focusing on communication skills with our children, to be able to be there listening to them, to literally, like Preeti just said, how do we frame, how do we react to their actions? So our flashcards are, if you look at our flashcards, they give us different situations where impulsively we, act out. But that's probably not the right way. So that's what our objective has been. सो वन अ सोल मैसेज और उन बच्चों के लिए जो बाहर अपने पेरेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आपका क्या रहेगा? So if you're saying parents, I'm very, very sensitive about the word parent. No parenting is wrong. It's always an unintentional, because we are right now transitioning from a traditional way of parenting to a modern way of parenting. So if you ask me, the parents have the duty and the obligation to empower their kids to be very, very confident kids and to be problem solving within themselves. And the children have to feel that kind of support. They should get that support from their parents. So if you give me in one line, if I have to say, all solutions lie within us, whether it is the parents or it is the children, So we have to look within, and you have to find the right way to look within. So NLP provides us with all those techniques, and we can actually find solutions. We don't have to hunt around and look for all those, figuring out outside. And patience. And patience, that's it. सो बच्चों का इसके लिए क्या रिस्पॉन्स रहा है आपका, जितने भी इंटरेक्शन रहा है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स? See, it's a good response. Basically, बच्चों से related तो है, पर parents needs to understand first, because parents के अंदर जो patience होंगे, reframing words होगा, calmness होंगी, then they will, delegate to the, kids. Because kids का जो mind है, वो जो brain development है, वो 0 to 2 years में 80% and 2 to 5 years में 90% develop हो जाता है. तो they are very intelligent. You think they are very smart kids. Have parents participated in this process? They have came in? Yes, very much. Thank you so much. आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से. आपका नाम? Leher. आपका what is your stall about? So we run a play area in Saket called Playtopia. It's an indoor play area where we have soft play and arcade games. So everyone can host birthday parties, play dates, baby showers. So it's a indoor place with a cafe for age group 1 to 4. देखा जा सकता है कि यहाँ बच्चे कितने इंटरेस्टिंगली कलरिंग कर रहे हैं. इट इज़ वेरी एंगेजिंग. तो कैसा लग रहा है? व्हाट इज़ द पीपल्स रिस्पॉन्स आउट हियर? Very good. Kids are loving the activity. So we are making the kids do painting, and so kids are loving it because we are a part of New Age Mompreneurs. They've given us this opportunity to come and display here and showcase our brand. So the name Mompreneurs. So what does it stand for? So we are all moms basically who are entrepreneurs. So this is a very good community where all working mothers, how we balance our professional life and our married life and being motherhood. So it's a community where we help each other grow, we promote each other, and it's a you make so many friends, you connect with so many different types of businesses here. So really nice. आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से. आपका नाम? राशि आनंद. What is your stall about? सो ये स्टॉल हमारा टुकटू गैलरी है. टुकटू गैलरी इज़ एन एनिमल सेंचुरी. वी आर अ होम टू 200+ रेस्क्यूड एनिमल्स. तो जितने भी जानवरों को छोड़ दिया जाता है या टॉर्चर किया जाता है, हम लोग उनको बचा कर लाते हैं. एंड वी हैव 2 सेंचुरीज, वन इन नोएडा एंड वन इन गुड़गांव. एंड इन दिस स्टॉल वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड यंग इम्पैक्ट चेंज मेकर्स, जिसमें कि जितने भी बच्चे होते हैं वो लोग स्टॉल्स लगाते हैं एंड दे रेज मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स. तो जैसा कि देखा जाए बच्चों ने पूरा स्टॉल संभाला है एंड दे हैव रेज्ड फंड्स. तो कैसा इम्पैक्ट रहा है उनके ऊपर? व्हाट इज़ देयर लर्निंग इनटू इट? So idea of creating this impact program was, one, if a child, anyone from the age group of 10 to 15, 16, when they run the stall, they learn what is entrepreneurship, because running a stall is not easy. They have to manage the game, they have to manage the prizes, they have to manage the amount of money they are raising.
Plus, for example, when we came here, there were so many stalls. How to ensure that you have the right marketing skills also, so that the children come to your stall instead of going to other 100 stalls. So this was the idea, to develop these 4 skills. In return, what Tuk Tuk Gallery is getting, so of course all the kids are raising money for us, and of course the marketing is also happening for us, so that everyone comes to our sanctuary. We are open to everyone. People can come, do their birthday parties there. We also have a lot of schools visiting us, because उसमें हम लोग उनको real time experiences सिखाते हैं, how to connect to the nature back. अब थैंक यू सो मच. आइए बात करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने इस स्टॉल को हैंडल किया है. आपका नाम? My name is Jan Sehgal. आपने स्टॉल हैंडल किया है एंड जैसे कि उन्होंने बोला इन्होंने 5000 रुपीज़ फंडिंग कलेक्ट की है. कैसा लग रहा है आपको? So I feel really proud of myself that I did something for these animals, and like I went to Tuk Tuk Gallery and I got so interacted with these animals. I was having really a good fun, and I've earned this much money, and I'm really happy to donate to these animals. If I may ask, what is your age? My age is 10 years old. Just 10 years old. तो बाहर जो बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या एक वन एंड ओनली मैसेज रहेगा? जो 10 इयर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, या फिर उससे ज़्यादा या कम उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? If you work hard, then you'll get really good rewards in your life. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से. आपका नाम? हेलो, आदित्य राणा. आपके स्टॉल का नाम क्या है? वर्चुअस हार्वेस्टर्स. तो इस नाम के पीछे what was the thought? The thought is eco-friendly product line with zero and negative carbon footprint. So all of our products, if you start from here, are entirely biodegradable and have net zero effect on the carbon emission. So we start with moss pen stands and decorative items from frames. Then we go to succulent plants. Then we go to plantable calendars. Then we go to plantable coloring books, self-growing kits, bamboo bottles, plantable pencil colors and crayons, and then to the microgreens. So we have radish and wheatgrass as a microgreen, and then we also have some growing activity for kids in order to indulge them in the growing things, because these days we have seen so much pollution. So we want the growing to not just be the responsibility of farmers, but should also come to a metropolitan people as well, mindset as well. So that is the idea. So entirely eco-friendly and renewable, using the waste material and bringing new products and designs in the market. So यहाँ पे बच्चों का response to this innovative idea कैसा रहा है उनका response? The response is mixed, I would say, because they are interested and afraid at the same time कि seeds grow करेंगे या नहीं. But we also have examples कि seeds grow कर रहे हैं. So it's a mixed response, you can say. Thank you so much. आइए बात करते हैं नेहा गोयल से, जिनकी बुक लॉन्च होने वाली है डिफाई योर ग्रेविटी. आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी. इसके पीछे क्या कहानी है और क्या लिंक है इसका, क्या आप स्टोरी बताएं इनकी? बेसिकली ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से है. मैं आई हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर 12 years. उसके बाद आई हैड माई ओन लिटिल फर्म एंड देन आई वेंट ऑन टू टीचिंग स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, 2 universities. व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट हम उनको तब जॉब रेडी करना शुरू करते हैं जब वो लोग ऐसी स्टेट में होते हैं कि दे डोंट नो व्हाट टू डू, एंड इट्स लाइक पुटिंग स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स. और वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. देयर इज टोटल डिसअपॉइंटमेंट amongst these. So this book will empower them to find solutions for themselves. So Adi is a character, the main character of this book, and he has finally come into a situation because of unintentional parenting style which led him to that. The parents are very, very concerned about him, but they didn't have the right way to bring him up. And that's what has led him into a person who's dejected in life. So now his mother helps him to bring out that's what we need parents to be like. They need to realize rather than becoming defensive, they need to come forward, realize the change in the styles that are required in the modern days, and then respond accordingly. So his mother takes him out of that situation, and she empowers him with the right kind of mindset.
basically it is a raw conversations between a boy and his mother. And that will give us, opportunity for all other parents to come forward and help their children in a manner which is required to empower them. And it's backed by a real life story of Preeti Ke Parinde fame, that choreographer, dance choreographer, Preeti. And she has gone through a similar journey, which had all those obstacles, all those limitations in her life. How she defied her gravity, how she came out of it. That is a very inspiring story. So this is going to be launched in December, first week. वी आर ईगरली वेटिंग. बहुत जल्द ये लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं हम लोग. सो बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर दिस बिग लॉन्च विद अ बिग थॉट बिहाइंड इट. थैंक यू सो मच. हम जुड़ चुके हैं डायरेक्टर प्रोफेसर एम.एन. हुड्डा के साथ. आइए जानते हैं उनका अनुभव यहाँ आके. सर, आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ के? बिल्कुल फैबुलस एक्सपीरियंस. ये जो छोटे बच्चों के राइजिंग स्टार्स का किड्स फेस्टिवल बहुत कम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है. एंड पिछले 4 घंटों में मैंने ये देखा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली एंड ट्रूली वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ द किड्स. एंड जिस इंटेंशन, जिस पर्पस, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ जो गिव राइजिंग स्टार फाउंडेशन के प्रमोटर मिस्टर अनुभव अरोड़ा और स्कूल यात्रा के प्रमोटर मिस्टर सुमित वर्मा काम कर रहे हैं, ये अपने आप में सराहनीय है. इसे सपोर्ट करना चाहिए. पर्पस है कि जो छोटे छोटे बच्चों के टैलेंट हैं उनको कैच देम यंग, उनको अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करें. आइडेंटिफाई करके रिकग्नाइज़ किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, ताकि वो टैलेंट आने वाले दिनों में और निकले और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं. सर, आपका मैसेज टू द यूथ, एक मैसेज मेरा मैसेज यूथ के लिए और सभी लोगों के लिए यही है कि बहुत थोड़ा वक्त हम सबको मिला है. इस वक्त में हम कुछ अच्छा काम करें, ऐसा काम करें जो हमारे बाद लोग याद रखें, ऐसा काम करें जिससे लोग प्रेरित हों, ऐसा काम करें जिससे लोग इंस्पायर हों. उनके लिए मेरी 4 पंक्तियां हैं कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा. जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरें, जाने कल तकदीर का क्या फ़ैसला होगा. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच. तो जैसे कि बात करी हमने बहुत सारे यहाँ के स्टॉल मेंबर्स से, और हर स्टॉल के पीछे कोई ना कोई एक कहानी छुपी हुई है. तो यहाँ वो स्टॉल अपना लेके आए हैं द ग्रेट इंडियन किड्स फेस्टिवल पे. हर बारी की तरह वैसा ही जोश, वैसा ही उत्साह देखने को हमें यहाँ मिला. अगले साल दोबारा मिलेंगे यहीं पे ही. जुड़े रहिए भारती नेटवर्क के साथ. मैं हरसिमर कौर, कैमरा पर्सन अंकित के साथ.